So let's do a quick recap of what we have covered in our previous session. So in our previous session, basically we saw the concept of abstract method and abstract class, right? So what is an abstract method? A method which does not contain any body, correct? Without any body. Yes. So it is just having the definition of the it is just having the declaration of the method, no body. So we just write that method, put a semicolon there. Such a method is also known as incomplete method, and it is an abstract method. We need to declare it as abstract if at all you want to create such a method. Then what is an abstract class? It cannot be instantiated, correct? And what else can we say about it? Which class will be abstract? Class having at least one abstract method. Okay, Shruti? Minimum one abstract method is enough to create a class as abstract. Yes, so that class will be abstract and we cannot create object of such a class. Once an abstract class is created, suppose we perform function, means we perform inheritance. We create a child class which is inherited from this class. So that abstract method is also inherited. If we do not override that abstract method, then what will happen? You understood my question? There is a parent class in which there is an abstract method. We inherit that class, we create a new class, and we do not override the abstract method. Child class will also become abstract, and we will not be allowed to create object of that child class. Correct. So that was the abstract class, abstract method concept. Suppose we have a static method in the parent class. Can we override the static method in the child class? Suppose we have a static method. Okay. Can we override the static method? Everybody is understanding the question. We have a static method in my parent class. My question is, can we override the static method in the child class? Yes or no? You said no, but may I know the reason why? Yes, look here, everyone. See, okay, observe this statement. We have written here employee E1 is equal to new programmer. So here E1 is pointing to a new programmer. Here E1 is pointing to sales manager. And in this case, E1 is pointing to admin. So when I write here console.writeLine E1, or in this case, look at this line number 88, everybody. When I write here console.writeLine E1, which information is printed? Employee information or programmer information? Suppose I am writing e1.calsal. Which calsal method is being called? Programmer calsal or employee calsal? प्रोग्रामर. अभिजीत प्रोग्रामर का होगा, ठीक है? हमने ओवरराइड किया है ना, so it will call the child class method. That is function overriding. So child class method will be called. So can I say that which method will be called depends on किसका object है उस पर depend करता है. The decision as to which method will be called depends on the object. And what do you know about the static method? What is the static method?
इट इज अ क्लास लेवल मेथड, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑब्जेक्ट. तो जो चीज ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं करती है उस पर तुम ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते. अंडरस्टूड? सो वी कैन नॉट ओवरराइड द स्टैटिक मेथड. ठीक है, ये जो स्टैटिक फंक्शन ओवरराइडिंग ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये स्टैटिक पे हम अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, so this is also an important interview question. Then yesterday we also saw the concept of interface. What is an interface? Component which have all the methods abstract. Very good. So when all the methods of a class are abstract, then it is defined as an interface. So basically we can say interface is a class in which all the methods are public and abstract. Okay, that is an interface. And also, in other words, we say interface is a contract between the service provider and service consumer. So once we create the interface, the next step is to implement the interface, where we actually override all the methods. So all the abstract methods will be given some body. वेरिएबल लिख सकते हैं क्या? Yes, we can. लिख सकते हैं, लेकिन वो स्टैटिक होना चाहिए या एक मिनट. हाँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. लेट मी जस्ट क्रॉस चेक. वी कैन क्रिएट प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ याद आ रहा है मुझे. लेट मी क्रॉस चेक, है ना. This is not allowed, but creating a property, I think so, is allowed. ऐसा कर सकते हैं. Okay. So again, we are just writing get semicolon, set semicolon. That means these two methods are again abstract. So when we go to the child class, we implement it and we give it a body. All right. So directly putting a variable is not allowed, but we can have a property inside it. Yes. So once we create an interface, then we can implement the interface where we just do the overriding. We provide body to all the methods. Now, if suppose there is an interface, now another point was that C# does not support multiple inheritance. That means you cannot create a class using more than one parent class. But you can implement multiple interfaces. That is allowed. अच्छा, ये x के लिए दे रहा है ना एरर, वो मैं हटा देती हूँ. So let this error be, but I hope you understood what I'm trying to say. We can create a class which is implementing multiple interfaces. We just provide these definitions and then we go ahead and create the object. So interface is like abstract class. You cannot create object of interface, but you can use it as a reference, and using that reference you can create the object here. Now when you say c.sum, it will call the method from the child class. This much everybody has understood. ये कल हमने देखा था. After that we moved ahead with the events and delegates concept. Delegate demo. So what is a delegate? What is a delegate, everyone? Type say function pointer. Right. It holds the address of the method. So we here we create like function 1, function 2. We were taking it as void. Now when we create a delegate, so return type and parameter list is important. So how to create a delegate? Delegate void, name of the delegate and the list of parameter. That is how you create the delegate. And how to use it? So what you will do, you will create the object of the delegate. While creating the object, you can pass the method name, and you can also attach multiple methods to the same delegate.
And when you call this delegate, it will eventually call function 1, function 2, function 3 like this. After this, we also created another delegate, mycal delegate, where you are passing double x and double y, suppose. And the return type is also double. So here we can have mycal delegate d2 is equal to new mycal delegate, and we are passing the method whose signature matches with the delegate. Also, we discussed that when a delegate is having multiple methods, it is also termed as multicast delegate. If that multicast delegate is returning something, and you have attached multiple methods, right? So every method is returning, intermediate results will be lost, and what you will get is the final answer. जो लास्ट वाला मेथड का आंसर रहेगा वही आपको एज एन आउटपुट मिलेगा. This much we had seen in our previous session. So till this point everybody is okay. सो द क्वेश्चन विच श्रेयस हैड आस्क्ड कि मैम ये हम इफ एल्स से भी कर सकते हैं ना, फिर इसके लिए डेलीगेट क्यों यूज कर रहे हैं, दैट वाज वन क्वेश्चन आस्क्ड. ओके, सो लेट मी टेक वन एग्जांपल. सपोज I want that, suppose there is a power cut. Okay, suddenly there is a power cut. Then I want that all the work that I have done on my system must be saved. Let me write it. The situation is that there is a power cut. So if there is a power cut, I want the first action to be taken is save all my work. And second, say shut down my system. These are the two things I want to be done when there is a power cut. Okay. So what I will do, I will define two different methods. So I will have a method called as save work, and I define this method. Then I will be defining one more method, that is shut down the system. So for shutdown also I have written this. Correct है? Shreyas, ठीक है? I have defined these two methods. One will perform the save operation, the other one will do the shutdown operation. Now the question is, if I directly write here save work and shut down, what will happen? If I call these two methods here, it will call it now only. जैसे हम program को run करेंगे ये दोनों call हो जाएगा. And it will save my work and shut down my system. Do I want it like that? मुझे वो अभी करना है क्या? No. So I should not call it. ऐसे तो अभी हमको कॉल नहीं करना है. कब कॉल करना है? जब पावर कट होगा तब. कब होगा पावर कट? मुझे नहीं पता. मे बी टुडे, मे बी टुमारो, मे बी नेवर. सो इफ पावर कट, ये कैसे लिखोगे आप? मीन्स हाउ विल यू राइट दिस दैट देयर इज अ पावर कट? ये तो एक एक्सटर्नल इवेंट है ना. तो हम क्या करेंगे, हम एक पर्सन को अपॉइंट करेंगे. उसको बोलेंगे हेलो भाई साहब, आप यहाँ खड़े रहो, आप देखते रहो, जब पावर कट आएगा ना तो हमने क्या किया, व्हाट आर वी गोइंग टू डू नाउ, लेट्स अपॉइंट सम. ये तो समझ में आया आपको कि डायरेक्टली यहाँ पे कॉल नहीं करना है. एवरीबॉडी इज ओके विद दिस पार्ट. तो अब हमने क्या किया, हमने बोला चलो एक लेट्स अपॉइंट समबडी. ये हमको अभी तो नहीं करना है, तो एक जन को बोलते हैं भाई तुम ध्यान दे दो पावर कट का. सो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी ऑब्जर्विंग इफ देर इज अ पावर कट. तो उसको बोलना है कि जैसे ही पावर, तुमको इस आदमी को पता चलेगा ना, क्योंकि इसको काम वही दिया है, तुम देखते रहो पावर कट हो रहा है कि नहीं. व्हेन देर इज अ पावर कट, उसको दो मेथड्स को कॉल करना है. तो बोलेगा अरे कौन से दो मेथड, मुझे दे दो ना. सो आई शुड गिव दिस पर्सन द टू मेथड्स. ये दो मेथड मुझे क्या करना है, इस पर्सन को देना है. सो आई हैव टू गिव दीज टू मेथड्स टू दिस पर्सन. देंगे कैसे, हाउ डू वी डू इट, हाउ डू वी. सो व्हेन यू आर पासिंग, व्हेन यू आर गिविंग समथिंग टू समबडी, इट हैज टू बी ट्रीटेड लाइक अ डेटा. मतलब क्या कि मैं उसको क्या दे दूंगी, फंक्शन का एड्रेस दे दूंगी. सो लेट्स से फंक्शन 1 इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, फंक्शन 2 इज एड्रेस ऑफ सेकेंड फंक्शन. ये दोनों मैंने इस इंसान को दे दिया. अब इसके पास ये दोनों चीजें हैं, तो वो देखता रहेगा, जैसे पावर कट है वो इन दोनों को कॉल करेगा. पावर कट नहीं है तो चुपचाप बैठेगा, इट वोंट कॉल इट. So that power cut thing that I am talking about is known as the event.
अंडरस्टूड? वो एक इवेंट है जो ऑकर होगा, उस वो जैसे इवेंट ऑकर होगा वो F1 F2 को कॉल करेगा. सो F1 F2 वी आर अटैचिंग टू द इवेंट. सपोज इवन, इवन को मैंने F1 F2 दे दिया, बोला जब ये इवेंट होगा ना तुम इसको कॉल कर देना. हम खुद कॉल नहीं करेंगे. सो वी कैन नॉट राइट एन इफ एल्स ब्लॉक ओवर हियर. ठीक है, वो खुद देखेगा और करेगा अपने मन से. जब वो इवेंट ऑकर होगा तो ऑटोमेटिक ये चीज हो जाएगी. इज एवरीबडी ओके विद दिस पॉइंट नाउ? So we have learned the delegate concept. Now let's see how to create an event and how to attach the delegate to the event. Okay. Okay. So now when you create an event, तो event को आप समझ लो, when we create it, it is more like a variable that we are creating. तो अगर यहाँ पर मुझे एक event variable बनाना है and I want to use it inside the main method, इसको एक काम करती हूँ, main वन दे देती हूँ. मेन में हम कोई भी चीज तभी यूज कर पाएंगे जब वो स्टैटिक होगा. ठीक है, सो लेट मी राइट हियर इवेंट. जब हम इवेंट बनाते हैं एट दैट टाइम वी हैव टू आल्सो मेंशन दैट इट इज गोइंग टू वर्क विथ व्हाट काइंड और व्हाट टाइप ऑफ डेलीगेट. तो यहाँ पर हमको लिखना होगा इट विल वर्क विथ से माई डेलीगेट. द सिग्नेचर मैचिंग पार्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो लेट मी जस्ट हैव public static void main my delegate d1 is equal to new delegate. The method is fun1. Okay, this is one delegate we have created. Now e1 is the event. How do you attach the delegate? We have to use plus equal to operator. This should be static. हाँ, वो static नहीं है इसलिए वो access नहीं हो रहा है. ये static है ना, तो static can access only static. So I have made this as static. So E1 plus equal to D1. So we say we have registered the delegate with event. हमने क्या किया, D1 नाम के डेलीगेट को E1 के साथ अटैच कर दिया. मतलब ये जैसा हुक जैसा समझ लो कि ये E1 एक इवेंट है like this, and to this we have attached this delegate D1. ऐसा इसको अटैच किया. So when this event E1 will occur, it will call this delegate. So now event, suppose event E1 has occurred, and now let me execute. You may see that event E1 has occurred. So it is going to call the function F1 fun1 because that is the delegate we have attached. I am function F1. ये syntax पहले बताओ, समझ में आ रहा है? This is the syntax we have to use to attach the delegate. अगर मेरे पास multiple delegates हैं, हो सकता है I have multiple delegates here. So we can also attach multiple delegates to the same event. जैसे मैंने कहा कि save work, shut down, ऐसे 2-3 काम हम assign कर सकते हैं ना. एक event काम अनेक ऐसा भी कर सकते हैं. So when this event will occur, it will one by one execute D1 and D2 and D3. क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, 100% नहीं तो भी you are getting the idea here. Everybody? Now just to explain how this is going to happen in real life scenario, मैं एक दूसरे टाइप का प्रोजेक्ट लेती हूँ. That topic is not included in the course content here, but वो देखोगे तो तुमको एक्चुअली समझ में आएगा इवेंट और डेलीगेट कैसे काम करते हैं. ठीक है, so let me go ahead and create a new project. And in this project options, if you scroll down, Windows Forms ऊपर गया क्या, एक मिनट. ये दिख रहा है विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन.
एवरीबडी कैन सी दिस. ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ है, हाँ, तो इसमें ज़्यादा उलझना नहीं है. इसमें घुस गए ना तो तुम बाहर नहीं निकल पाओगे. ठीक है, बस मुझे एक पॉइंट बताना है अपने समझाने के लिए, इसलिए मैं ये ले रही हूँ. डोंट टच दिस मच. इसको ज़्यादा घुसो मत, नहीं तो तुम निकल नहीं पाओगे, यही करते रह जाओगे दिन भर. इट इज़ सो इंटरेस्टिंग. सो डेमो डेलीगेट इवेंट. सो पाइथन पीपल माइट बी नोइंग टिकिंटर अभी शायद हुआ नहीं तुम लोग का. सो वी कैन बिल्ड अ जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन. ठीक है, तो उसके लिए ये यूज होता है. सो यू कैन सी दिस टाइप ऑफ इंटरफेस नाउ. Earlier what we were doing is a console application. This is known as Windows Forms application. ठीक है, यहाँ पर अपने पास एक टूल बॉक्स की फैसिलिटी है. So there is a toolbox. You can see thousands of controls are there. So let's drag and drop a button over here. Right click, go to properties, and here I am saying click me. Let's say this is the button I have created. Now when I click on this button, I want some task to be done, right? So what I'll do is I'll just double click on this button. सिर्फ ये क्या करना है अपने को, बटन पे डबल क्लिक करना है. Now see here. Can you see one method has got generated here? What is the name of the method here? button1 underscore click. ये एक मेथड बन गया, ऑटोमेटिक बन गया. यहाँ पर मुझे कुछ तो आउटपुट देना है. सो आई एम राइटिंग हियर मैसेज बॉक्स डॉट शो I am clicked. Let's say this is the message I want to show. So let me just run this application first. ये फॉर्म है, उसके ऊपर ये बटन है, उस पर क्लिक करो. आपको मैसेज बॉक्स में मैसेज दिख रहा है, आई एम क्लिक्ड. Clicking on this button is the event, and when I click on it, it is performing this task. Did you all understand? चलो मैं यहाँ पर एक और मेथड लिख देती हूँ. Let me define one more method. The signature has to be the same. वो आपने देखा ना इवेंट बनाते समय अपने को डेमो डेमो क्लिक ऐसा कुछ. तो मैंने ये एक और मेथड लिख दिया और उस मेथड का नाम क्या है, डेमो क्लिक है. नाउ व्हाट आई वांट, जब ये बटन पे मैं क्लिक करूं तो ये दोनों मेथड्स कॉल होने चाहिए. सो ऑन द राइट हैंड साइड कैन यू सी दिस वन form1.designer.cs फाइल दिख रहा है आपको? एवरीबॉडी कैन सी दिस ऑन द राइट हैंड साइड. जस्ट गो टू दैट फाइल और यहाँ पर ये आपको दिख रहा है विंडोज फॉर्म्स डिजाइनर जनरेटेड कोड. इसको एक्सपैंड करो. कैन यू सी दिस लाइन एवरीवन? व्हाट इज हैपनिंग हियर? button1 is equal to new button. So can I say button object is being created here? Now important line is this line. इस line को ध्यान से देखो. What do you observe here? button1 dot click. So what is this click here? ये click क्या चीज है? Can I say this is the event of the button? और यहाँ पर देखो कौन सा ऑपरेटर यूज किया, प्लस इक्वल टू, और उसके साथ हमने क्या अटैच किया, button1 click. अब इसी को मैं फिर से लिखती हूँ और वो हमने मेथड क्या बनाया था, डेमो क्लिक था ना. अंडरस्टूड? तो बटन क्लिक के साथ button1 अंडरस्कोर क्लिक, बटन क्लिक के साथ डेमो क्लिक, दोनों को हमने अटैच कर दिया. सो कैन आई से ये तो मेथड का एड्रेस है ना, ये भी मेथड का एड्रेस है ना, ये दोनों उसके साथ अटैच हुआ है. सो नाउ व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस, आई एम क्लिक भी आ रहा है, वाओ दिस इज फन भी आ रहा है. समझ गए? So now are you able to visualize this? We are attaching the method with the click event of the button. Understood?
जस्ट ये आपको समझाने के लिए कि ऐसे होता है, मतलब कैसे हम थियोरी में या कंसोल एप्लीकेशन में इवेंट डेलीगेट पढ़ते हैं तो इतना समझ में नहीं आता है कि वो यूज कैसे करना है, बट उसका जो रियल इंपॉर्टेंस है इट कम्स अप विद व्हेन यू स्टार्ट बिल्डिंग द अदर एप्लीकेशन. इज इट ओके एवरीवन? हाँ, अब इससे एक और कॉन्सेप्ट आता है सामने. इफ यू ऑब्जर्व दिस ये जो फाइल हमने अभी डिस्कस किया, इसमें आप देखोगे ना तो फॉर्म 1.cs. कैन यू सी हियर पार्शियल क्लास फॉर्म 1 लिखा हुआ है, और एक और जगह फॉर्म 1 क्लास दिखेगा हमें. हाँ, कैन यू सी दिस पार्शियल क्लास फॉर्म 1? समझो कि मैं मुझे एक क्लास बनाना है. आई एम क्रिएटिंग वन क्लास. से टेस्ट नाम का एक क्लास बनाना है, और ये क्लास के अंदर मेरे पास 1000 मेथड्स हैं. इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज क्लास. I have to add so many methods here. So don't you think my file is going to become very bulky and very heavy? ये जो क्लास टेस्ट है इसमें मुझे बहुत सारे मेथड्स ऐड करने हैं. सो दिस फाइल इज गोइंग टू बी वेरी लेंदी, वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कुछ मेथड्स डिफाइन करते हैं, F1 F2 लाइक दिस, जो लॉजिकली कुछ तो रिलेटेड होंगे. और हम एक दूसरी फाइल लेते हैं, लेट्स टेक अनदर फाइल. उसका भी ना, उसमें भी हम क्लास टेस्ट बनाएंगे. और F4, सॉरी, F4 F5 वगैरह एंड ऑल वी विल कीप इट इन अ डिफरेंट फाइल. अंडरस्टूड? सो आई एम हैविंग द सेम क्लास बट आई एम क्रिएटिंग देम इन डिफरेंट फाइल्स. तो ये एक फाइल में चला गया, ये दूसरे फाइल में चला गया, ऐसा अपना रिक्वायरमेंट है. But you know, right? अगर एक when we have already created a class test, I recreate it. It will show error because it will say class redeclaration error. So we need to now tell the compiler it is the same class which is present in multiple files. So we use the partial keyword here. दोनों जगह पे जाकर जाकर आप क्या लिख दोगे? Partial. So by writing partial, we are telling the compiler it is please build them and combine them as one single class. It is spread across multiple files. Understood everyone? Partial class is also an important interview question. Clear है? Partial class concept, event, delegate, this much everybody has understood? Okay, now as I had told you that today we are going to start with multi-threading, but before that one more topic I wanted to cover. One topic is like array, because that is something you might need so many times. So we need to know how to create an array in C sharp. So I hope all of you are aware of the concept of an array. Array is a homogeneous set of elements. You all know that, I think so. In in C sharp, it is a reference type. What is a reference type? In C sharp, array is considered as reference type. What do you understand by that? Correct. The reference will be on the stack. The actual object will be created on the heap. So how to create how to create an array? Int, just put a square bracket, my arr. When you write something like this, mm,
Okay. So as I said, in square bracket ARR, when you write like this, this is considered as a reference of an array. Means it is just a pointer. I have not created the real object. Now we will write new int and now you specify the size here. So this means now the actual block is created which is of size. ये दोनों एक ही line में भी आ सकता था, but I just wanted to tell you only writing this much will not create the array. It will just create the reference of the array. So using that reference you can allocate a memory blocks in new int. अभी आप इसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये नॉर्मल वेरिएबल बनेगा. So just put a pair of square bracket to indicate that your intention is to create an array. So how the memory allocation will be done? So this ARR is present over here, that is on the stack, and the real object is there on the heap. So 0, 2, 3, 4, like this. Right now, as I earlier told you, the initialization will be done internally and all the blocks will be set to 0. So if I want to see, so we write console.writeLine. If you want to see all the elements, so what we can do is for, we can use integer I equals 0, I less than 5, I plus plus, ARR of I. I hope everyone is comfortable with this syntax. ARR of I value is 0. That means it will print the first value, then 1, then 2, and so on. So let's execute this code. So right now you may see all these values are 0. If you want, you can initialize them over here also. आप चाहो तो ऐसे भी initialization कर सकते हो. While creating, in a pair of curly braces, you may pass the data. So if you execute this, you may see the result as 1, 2, 3, 4, 5. सबको syntax समझ में आ रहा है क्या? Everybody is okay? Sanju, are you understanding? Manoj? For Java, I think so almost similar syntax is there, right? So we don't have to worry too much. Almost same thing is used here. This is one way. We have another option. We can also use for each loop. For each integer x in ARR. That is another way of writing it. Sometimes it is possible that I am not aware of how many elements are there. यहाँ तो अपने को पता था तो हमने यहाँ 5 लिखा, right? Sometimes I may not know how many elements are there. So you can simply write for each integer x in ARR. So you just go and start fetching the element, iterate through the elements and get me the elements one by one. So this is another way of getting the output. Both the syntaxes are okay, everybody? Now let me go back to our inheritance demo example. Inheritance demo example. Now what I will do here is, so can you tell me what is this all EMP now?
एरे नहीं है वैष्णवी, वो एरे का रेफरेंस है. इट्स अ रेफरेंस ऑफ एन एरे, राइट? एरे इज नॉट येट क्रिएटेड. कैन वी राइट इट लाइक दिस एवरीबडी? अभी एरे नहीं बना है, अभी क्या बना है? सिर्फ पॉइंटर बना है. गॉट इट? अभी मैंने वो इंटीजर वाला बताया था ना. नाउ आई एम गोइंग टू राइट all emp is equal to new. Now what is this? अब क्या बना? array of employee reference, not object. Interesting, right? Employee reference का array बना है. So there are 3 employee references. Let me just draw the diagram for these 2 lines here. So here we have all EMP. Let's say it is holding the address 100. At this 100 location, now we have created a block. But please understand, this will be 0, 1, 2. ये 3 blocks का बना. But what is it? Reference of employee. Reference है, मतलब ये सारे pointers हैं. Using the first reference, I can create some maybe programmer object. Using the second reference, I can create the sales manager object. And here I can put in the admin object. Are you understanding? ये तीनों E1, E2, E3, it is as good as writing EMP E1, E2, E3. याद रखो, जब तक आप E1 is equal to new EMP नहीं लिखते, your employee object will not be created. यहाँ पे आपने न्यू लिखा है, लेकिन ब्रैकेट कौन सा है? देखो, स्क्वायर ब्रैकेट है. इट इज नॉट सिंपल ब्रैकेट. जब तक सिंपल ब्रैकेट नहीं लगाओगे, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा. So in the first and the second line, employee objects are not created. Only the references are being created. So before we proceed, everybody is okay with this point? Now what I'm going to write is, now observe this code everyone. दिख रहा है आपको? So can we say now the code is becoming more and more elegant? अभी वो एम्प्लॉय का बार बार रेफरेंस बनाने से अच्छा मेरे पास 50 एम्प्लॉय है. आई कैन जस्ट क्रिएट अ 50 रेफरेंसेस एंड आई कैन पुट देम लाइक दिस. मेक सेंस? And if I have it like this, can we not use a for loop now? So I can write for each employee in all employee in all EMP. What is all EMP? What is all EMP? It is the reference of 3 employees. So when you iterate through it, first object, second object, third object, like this we will have. So if I write console.writeLine E,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इज दिस फॉन्ट ओके, रीडेबल है? So let me explain the memory allocation one more time. So all of you please focus here. We are writing. First we have created the reference here. So what is this? All EMP. It is a reference. Using all EMP, we are creating a new array of references. कितने references बनेंगे? 3. तो आप ऐसा समझ लो कि E1, E2, E3 बन गया. It is like this. So just understand E1, E2, E3 we have created. So this is holding suppose address 100. Now what are we writing here? All EMP 0. Matlab, can I say this is E1 is equal to new programmer. So this is now holding another object, that is the programmer object. E2 is holding another object, that is maybe a sales manager, and this is holding another one, that is admin. यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है क्या? This much everybody is understanding. Each reference is pointing to individual objects. Now we go ahead and apply the for each loop for each employee in all EMP. So when you iterate through them, you get the first object, second object, third object and so on. तो ये एक एक करके ऑब्जेक्ट इसमें आते जा रहा है. So when I say console dot write line E, so internally it is E dot toString, E dot toString for programmer, E dot toString for sales manager, E dot toString for admin, E dot calcal. So programmer calcal, sales manager calcal, admin calcal. So can I say now it is a very beautiful polymorphic statement? जैसे ही लूप चलेगा उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है. एक बार वो प्रोग्रामर का कैलसेल कॉल कर रहा है, एक बार सेल्स मैनेजर. सो ऑल व्हीकल्स स्टॉप. So first vehicle will stop, second vehicle will stop, third vehicle will stop, like this. आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, this much everybody has understood. So how to create an array, that part you have understood, right? Now in C sharp we have one more concept that is called as an indexer concept. सो व्हाट इज दिस इंडेक्सर कॉन्सेप्ट? अभी मैंने आपको जस्ट एरे का समझाया है ना, तो एरे से जुड़ा हुआ इंडेक्सर कॉन्सेप्ट है. व्हेन आई एम राइटिंग ऑल ईएमपी स्क्वायर ब्रैकेट 0, व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? इट रेफर्स टू द फर्स्ट एलिमेंट इन एरे, करेक्ट? ठीक है. Suppose I have a class called as company. Okay. And inside this company class, let's say I have created an array of employees. ऐसा assume करो कि यहाँ पर मैंने एक array of employees बनाया है. कितने array, कितना size लिया मैंने? मान लीजिए 10 का size लिया. So when I create the company object, रुको, इससे थोड़ा सा शायद immediately आपको समझ में ना आए. रुको, हाँ, wait.
Let me take another example. Time.cs हमने already बनाया ना. This is a class time inside which we have HR, minute and second. Okay. Now coming back. यहाँ पर अभी हमने टाइम का ऑब्जेक्ट बनाया है. समझो मुझे कुछ इस तरह से लिखना है. T1 square bracket 0. Suppose I want to apply the square bracket to this T1. Now T1, is it an array? T1 हमने array बनाया है क्या? So is the square bracket applicable to T1? No. So it is already flashing up the error, right? लेकिन समझो मेरा रिक्वायरमेंट है कि अगर मैंने T1 स्क्वायर ब्रैकेट 0 लिखा ना, तो तुम मुझे HR जो आवर्स है वो दे दो. Then suppose I want to write here 1. Then suppose I want to write here 2. तो 0 should return the hours, ये मिनट्स रिटर्न करना चाहिए और ये सेकेंड्स रिटर्न करना चाहिए. ऐसा मेरा रिक्वायरमेंट है. आई वांट टू अचीव दिस. अंडरस्टूड एवरीवन? क्या बोल रही हूँ मैं? अभी तो एरर आ रहा है. क्यों? क्योंकि T1 एरे नहीं है. बट आई वांट टू इम्प्लीमेंट दिस. आई वांट टू राइट T1 स्क्वायर ब्रैकेट 0 एंड आई वांट टू सी आवर्स, मतलब 10 आउटपुट आना चाहिए. इस केस में 20 आना चाहिए, इस केस में 30 आना चाहिए. दैट इज माई रिक्वायरमेंट. So what we will do, we will go to the time class, and here we will write public int. We use the this keyword. This. एक मिनट. One second. I'm just missing out with the syntax. Sir. Square bracket. Okay, sorry, I missed on the square bracket. Public int, and here we have to use the square bracket, integer I. Now inside this, जैसे हमने प्रॉपर्टी का सिंटैक्स लिया था वैसे ही आता है गेट. इफ आई इक्वल टू 0 तो मुझे क्या रिटर्न करना है? रिटर्न HR. ये वाला चीज समझ में आ रहा है आपको? अच्छा ठीक है, बाद में सिंटैक्स और एक बार समझाती हूँ. टाइप एक्सपेक्टेड, पब्लिक इंट.
या तो मैं else part में ना -1 is not a valid data. So in else section I have said return second. In the set part, प्रॉपर्टी का एक बार प्रैक्टिस किया ना सबने, प्रॉपर्टी आएगा तो ही ये समझ में आता है, ठीक है। ओके, नाउ ऑब्जर्व दिस एवरीवन। अभी जस्ट हमने क्या किया, वी क्रिएटेड दिस टाइम ऑब्जेक्ट, टाइम t1 is equal to new time and we passed here 10, 20 and 30, करेक्ट है। अब जब मैंने यहाँ पर लिखा t1 square bracket 0, what is the data type I am passing here? Integer. तो ये इंडेक्सर मीन्स इट लुक्स फॉर दिस टाइप ऑफ मेथड, दिस नाम का एक मेथड ढूंढता है, प्रॉपर्टी ढूंढता है जिसमें इंटीजर आना चाहिए। सो हियर यू कैन सी इंटीजर। Now look at the get part. It will go to the get part. I value is 0. We passed a 0. So what it is returning? HR. So this part will be substituted with HR. This concept wherein a normal object is customized to behave like an array is called as indexer. मतलब उस पे हम indexing कर रहे हैं, 0, 1, 2 कर रहे हैं, समझ रहे हो? Now here I can also write t1 square bracket 0 is equal to say 50. यहाँ पर हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। इन दिस सिनेरियो वी वर फेचिंग द वैल्यू। तो जब आप फेच करते हो तो गेट आता है। इन दिस केस वी आर असाइनिंग द वैल्यू, सो वी आर ट्राइंग टू सेट द वैल्यू। तो अब वो किसके पास जाएगा? यहाँ पे। सो व्हाट आर वी पासिंग हियर? 0, तो 0 पे जाएगा। और ये जो डेटा है 50, दैट इज कंसिडर्ड एज वैल्यू, तो वैल्यू इज असाइन टू एचआर। ओके, आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? सो नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अभी मेन में हम आ जाते हैं program.cs. You can see that error has gone, and if I execute this, I should see the output as 10, 20, 30. 10, 20, 30. ये वाला समझ, प्लीज रिपीट सेट। हाँ, ओके। सो सपोज आई एम राइटिंग console.writeLine t1 square bracket 0. इस केस में हम t1 0 की वैल्यू को रीड करके यहाँ प्रिंट कर रहे हैं मनोज। तो ये इंटरनली कौन सा मेथड कॉल करेगा? गेट। But if I am writing t1 square bracket 0 is equal to something, say 30. So my intention is I am assigning the value here. तो जब भी हम वैल्यू असाइन करेंगे वो किसको कॉल करेगा? सेट को कॉल करेगा। सो इट विल गो टू द सेट पार्ट हियर। सेट में अब वो ये जो 0 आपने पास किया है दैट इज द आई वैल्यू। सो हियर इट विल चेक इफ आई इज इक्वल टू 0। सो यू कैन सी हियर HR इज इक्वल टू वैल्यू। तो ये वैल्यू कहाँ से मिलेगा? ये जो वैल्यू आप दे रहे हो, दिस विल बी स्टोर्ड इन वैल्यू। तो अगर 0 है तो वो वैल्यू किसको मिल गई? HR को। 1 है तो वैल्यू किसको मिलेगा? मिनट को, एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी ओके विद दिस पार्ट? Now sometimes I may not see, this is little bit again confusing when I say 0. तो अगर मैं बोल रही हूँ तो I can say 0 can be considered as HR.
somebody may say no, 0 we will take as second. So this might be a little bit confusing. So let's not have it confusing, but what if I want to write something like this? मतलब मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंटीजर ना पास करूं, स्ट्रिंग पास कर दूं, आवर्स दे दूं, तो तुम मुझे आवर्स का डेटा दे दो. इवन इट इज मोर बेटर एंड लेस कंफ्यूजिंग. कैन वी से लाइक दिस? थोड़ा सा मीनिंगफुल हो रहा है. हियर आई विल से मिनट्स, मिनट, एंड हियर वी विल से सेकेंड. ऐसा अगर हमको लिखना है तो. बट द क्वेश्चन इज, here we have defined the indexer which is accepting an integer, but you are passing a string, a problem. So what we can do is we can go back and we can redefine the indexer, but this time I will write here string I. अब हमने क्या डेटा टाइप पास कर दिया है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर? स्ट्रिंग. दिस इज इंडेक्सर ओवरलोडिंग. हम एक ही क्लास में मल्टीपल इंडेक्सर्स भी लिख सकते हैं. इजंट इट इंटरेस्टिंग? एम्प्लॉय का नाम पास करो और उस नाम का एम्प्लॉय को ढूंढ कर निकालो. सो इट इज लाइक दैट, राइट? इफ I equal to ये गेट हो गया? क्यों एरर दे रहा है? नॉट ऑल कोड पास रिटर्न वैल्यू. या तो ऑल कोड को रिटर्न एल्स सेट. ठीक है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द कोड एवरीवन? अभी हमने आई को लिया है, लेकिन इंटीजर की जगह पे हमने क्या ले लिया है? स्ट्रिंग. सो नाउ we can access the indexer using the string. So this is also possible. So if you have understood, please type U for understood. And in case you have not understood, please type no, not understood. अंडरस्टूड का यस यू टाइप किया. अभी फंसने वाले हो तुम लोग. मैं एक टास्क दे रही हूँ अभी. What you have to do now is you have to create a company class. I want to create a class called as company, जिसके अंदर आपको array of employee लेना है. कितने employee? यूजर से ले लो. Size take from user. You may use a parameterized. कंपनी के लिए आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करो कि समझो मैंने 5 पास कर दिया तो 5 एम्प्लॉयज का एरे बनेगा. 10 पास कर दिया तो 10 एम्प्लॉयज का एरे बनेगा. ये पॉइंट समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? After this, then you have to write the methods like add emp. तो add emp क्या करेगा? उस एरे में एक नया एम्प्लॉय ऐड करेगा. Similarly, you can have a functionality called as search employee. Then edit employee.
and also you can have delete employee. So all these operations you have to perform on that array. Array में element delete कैसे करोगे? चलो delete का या तो रहने दो. Add किया आपने, search करोगे, edit करोगे. I want you to start working. कुछ problem आएगा तो मुझे बताओगे, मैं help करूँगी. Then when you create the object, suppose I create an object C1 of this company and I pass 0 here. So what you are going to return? First employee आप मुझे return करोगे. समझ रहे हो? So you have to implement the indexer in this case. या फिर C1 square bracket अजय when I type. तो आपको स्ट्रिंग इंडेक्सर ओवरलोड करना है कि एम्प्लॉय का नाम अजय है तो वो एम्प्लॉय मुझे रिटर्न करो. अंडरस्टूड एवरीवन? द क्वेश्चन इज क्लियर? सो आई वांट एवरीबॉडी टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. जहां पे प्रॉब्लम आ रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रहा है तो मुझे पूछोगे. ठीक है? So this was an important topic to be covered, that is indexer, which was in connection with property and all. So I have covered that. So if everybody is okay, please type P for proceed. Then we can move forward. And all of you, you will be mailing your assignments to me on trainer@firstbitsolutions.com. इस पे अपने अपने असाइनमेंट मेल करोगे. सब्जेक्ट लाइन में डाल दो अपना नाम एंड विच असाइनमेंट यू आर सेंडिंग. असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 ऐसे भेजते जाओगे. ठीक है? First assignment was basic assignment, second one was inheritance assignment, and this is the third one, that is the company one. Let me list down. First assignment you have received is basics. Second was on inheritance, and the third one is on company. Just today that I have explained you. All right, everyone? Clear here? Okay. Now let's move forward towards the next topic, that is multi-threading. So before I start with multi-threading, can you tell me, do you know something about multi-threading? Any idea what is multi-threading? Okay. Others? No one knows what is multi-threading? Independent process. Yes, others? Vaishnavi, Shruti, Sanju, many process at same time. Okay. और कोई? Shruti? Multiple independent process running simultaneously. Okay. So let's have a discussion over it. Run multiple threads at the same time. Okay. See, when I am not running my system, suppose my system is shut down, then where are all my programs? अगर सिस्टम शट डाउन है तो रैम पे रहेगा श्रेयस. RAM is a temporary storage unit. All the data is erased from the RAM when you shut down the system. Okay.
So it is present on the hard disk. So whatever programs we have, let's say we have a lot of applications installed on my system, so they all will be present, or I can say they all are sleeping on the hard disk. अभी वो सब कहाँ पे है? हार्ड डिस्क में. जो भी हमने बनाया है वो सब कुछ हार्ड डिस्क में है. So when we have some applications on the hard disk, it is termed as, we defined it as a program. Okay, it is termed as a program जो hard disk में होता है. Now, when we want to run the application from the hard disk, it should be shifted to the RAM because the CPU is going to pick up the instructions from the RAM. So this application will now be shifted to the RAM. So P1 has now been shifted to the RAM. Suppose I also want to run P3. So P3 will also be shifted. And besides this, operating system is also there on the RAM. Let's say P4 is also there on the RAM. मतलब मैंने अभी देखो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ब्राउजर भी ओपन है और विजुअल स्टूडियो कोड भी, विजुअल स्टूडियो भी ओपन है एंड पेंट भी ओपन है. So 3 applications are there. So 3 programs are there on the RAM. Whenever you shift or whenever you load the program from the hard disk to the RAM, then this is termed as a process. This term process is the word given to the program which is transferred from the hard disk to the main memory. अभी ये main memory में ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? Process कहते हैं. This is clear, everyone? If you observe my system, on my system, I have the browser also running, Paintbrush also running, Visual Studio is also running. So 3 applications are running on my system. Is it multi-threading now? So this is not called as multi-threading. This is known as multi-programming. ठीक है? इस concept को, now why we are using this concept, वो तो बात की बात है, but अभी इसको हम क्या कहते हैं? Multi-programming. Earlier when the computer system was designed, it was not supporting multi programming. तो उसमें क्या होता था? At a time I could not run multiple programs, I could run only one program at a time. So let's say that there is only one program, that is P1. P1 is सिर्फ लोड होगा और CPU अभी किसको रन करेगा? P1 को रन करेगा. अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? जैसे अभी हम प्रोग्राम बना रहे हैं, उसपे मैंने लिखा यूजर से एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर. So there might, when I'm running the application, there might be a situation where the application wants to take input from the user. मुझे बोल रहा है कि type करो something. Sorry, my screen sharing is stopped, I think so. 1 minute. Visible? अगर मान लीजिए फिलहाल एक ही प्रोग्राम है जो रैम पे रन हो रहा है, ओनली वन प्रोग्राम इज देयर. ओके, सो व्हेन वी लोड दिस P1 प्रोग्राम इनटू द मेमोरी, CPU इज रनिंग दीज इंस्ट्रक्शंस. यहाँ पे समझो यूजर से मुझे इनपुट लेना है. यूजर इनपुट टाइप करेगा, ठीक है, लेकिन हो सकता है ना तभी मेरा फोन आ गया. सो आई स्टार्ट टॉकिंग ओवर द फोन एंड आई एम नॉट टाइपिंग एनीथिंग. इफ आई एम नॉट टाइपिंग एनीथिंग, यूजर इनपुट नहीं दे रहा है, तो प्रोग्राम आगे बढ़ेगा क्या? It is stuck over here. So CPU is just waiting here for you to type something and you are not typing anything. So can I say CPU is time is getting wasted here? So let's ask the CPU, अरे तुम अपना टाइम यहाँ वेस्ट मत करो, हम एक दूसरे काम पे तुमको लगा देते हैं, चलो. So you start working on this one, and once you complete this, come back and go ahead with the previous task. That is what is multi-programming.
So we perform multi-programming for the efficient utilization of the CPU. होता है ना, समझो अगर मैंने एक दिन चलो डाउट सॉल्विंग सेशन रखा, अभी मैं मनोज का डाउट सॉल्व कर रही हूँ, बट मनोज इज सेइंग मैम माय पीसी इज हैंग्ड, it is not loading. So I'll say, okay, Manoj, you wait. I will continue with Shreyas. I'll start doubt solving for Shreyas. In the meanwhile, Manoj will be ready with his system. When I finish with Shreyas, again I can come back to Manoj and solve his doubt. That is what is multi-programming. Everybody okay with this? So when we have multiple applications, different applications running within the RAM, which are being executed by the CPU, that is called as multi-programming. Now, let's look at Visual Studio Code, suppose. In this Visual Studio Code, have you seen that when we start typing, this intelligence is coming up? अपने आप वो अपने को help दे रहा है? And can you also see some characters coming up in front of me? इतना भी मुझे बता रहा है कि अरे तुमको ये टाइप करना है क्या, लो मैं ही टाइप कर देता हूँ, तुम छोड़ दो, तुम आराम करो, तुम थक गए. So it is also helping me, types the characters as well. तो मैंने क्या किया, I just pressed a key. Visual Studio is coming up with the intelligence. It is also coming up with a bunch of characters and it is trying to help me. तो हम कह सकते हैं तीन चीजें इसमें एक साथ चल रही हैं. Within the same application, multiple things are happening here. This is multi-threading. Understood? Within the same application, when we have different tasks running, that is called as multi-threading. Are you all understanding this point? That we have one application. चलो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि मेरे पास एक ही प्रोग्राम है. There is one program. Within this one program, we might have different activities. So this is the first activity, this is the second activity, and this is the third activity, suppose. So this is task T1, this is task T2, this is task T3. So now the CPU has been assigned to my process. ये अपना एक process है, ठीक है? So CPU has been assigned to this process. So CPU might be performing the task T1 for the time being, suppose. But T1 has gone to perform some maybe input output operation. T1 अभी CPU किसको मिला? T1 को. So T1 was running, but it went for IO operation. तो अब मेरे पास CPU आया, it was performing the task, but that task itself is busy now. So don't you think CPU time will be wasted? So let's ask CPU, okay, you don't go anywhere, you perform T2. If T2 is busy, then you start performing T3. In this way, I will get a feeling, and I hope you all know CPU is the fastest element on our computer system. So it is touching T1, it is touching T2, it is also touching T3. सभी को वो run कर रहा है. So we will start getting output from T1 as well as from T2 as well as from T3. So multiple tasks within the same process are running at the same time. That is what is multi-threading. Clear? So then the question is, let's even try and understand what is a thread. When you look at any program, any code, the code has got some set of instructions. यहाँ पे बहुत सारे lines हैं. Now we said we will assign this to CPU. तो CPU क्या करता है? It executes the first instruction. Within a fraction of second, it will complete. Then it will pick up next. Continuously, CPU is executing these instructions, right? Can we say like this? पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा. Like this, CPU is executing the instructions one by one. मतलब अगर मुझे चाहिए कि CPU को busy रखना है, so I should continuously keep giving instructions to the CPU. So this continuous set of instruction which the CPU executes
is termed as a thread. Literal meaning of thread is like which is having a continuity. Thread मतलब धागा ना, एक continuation में चलता है. So these are all the points which are connected and which are being given to the CPU for execution. So हमने CPU को ये चीजें दे दी और बोला तुम इसको रन करो. So we are giving one execution path to the CPU. So thread can be defined as execution path for the CPU. That is one definition. The other definition is, as I said, the thread, or we what are we doing? We have one process, right? Inside one process, I created multiple execution path. जैसे ये वाला example अगर आप देखो. In this case, there is process is one, but it has 1, 2, 3. Multiple execution path have been created. तो ये एक execution path हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया. Like this we have created. So thread is also known as lightweight process. Why lightweight process? Because it is smaller than the process. It is existing within a process. तो वो process जितना बड़ा नहीं होता है, वो process से छोटा होता है. Understood? Both the definitions are clear for the thread. Now, as I told you that when in today's operating system, आजकल के operating system में हम बहुत सारे we are running so many applications at the same time. So we have the operating system, then we have process P1, we have process P2. Like this, we have different processes present. Okay. Now, what operating system does? It maintains a kind of table. Operating system क्या करता है? Table maintain करता है. In this table, it maintains for a particular process. एक process के लिए process ID. What is the memory block start and end? So memory address start end. कि ये तुम्हारा block है, इसको cross नहीं करना है. So what address is there? This process might be using some files, etc. So files, etc. If there are some other resources, so resource details, everything about the process is being maintained in a table. This table is known as PCB, that is process control block. Got it everyone? हर process के लिए उस process की कुछ priority हो सकती है. So what is the priority of this process and so on. All these details will be maintained by the operating system for these processes. Is that okay? So this is done by the operating system. In the similar way, when we are using thread, तो एक process के अंदर thread होगा T1, T2, T3. So like we have PCB for processes, we have TCB for thread. So this will be termed as thread control block. So what will be present in thread control block? The thread ID, the means other things are also there. वो बाद में समझाती हूँ. See, this T1, T2 and T3, they are all a part of the same process. समझ में आ रहा है? ये जो threads हैं, 1, 2, 3 thread, वो इसी process का हिस्सा हैं. So they all will have the process ID, that is PID.
मतलब ये सब किसके, ये तीनों थ्रेड किसको पॉइंट कर रहे हैं, या क्या बोलना चाहिए उसके लिए, जो पेरेंट है वो कौन है, P1 है ना. सो प्रोसेस आईडी फॉर इन दिस केस एग्जांपल विल बी P1. तो इन सब लोग किसको पॉइंट कर रहे हैं, P1 को पॉइंट कर रहे हैं. ठीक है. ऑल दीज थ्रेड्स शेयर ऑल द रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज सारे थ्रेड्स को मिलते हैं. So, means एक प्रोसेस के लिए जो भी चीजें हमने बनाई हैं दैट इज शेयर्ड बाय ऑल द थ्रेड्स. अंडरस्टूड. And now the thread may have its own priority and all those things will also be there. यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? Everybody is able to understand this? Now the question is, who will create the thread, or how we are going to create the thread? As I said, thread is within the process. Thread क्या होता है, process के अंदर बनता है. That means it is the application level programming. एप्लीकेशन लेवल प्रोग्रामिंग मतलब ये अगर प्रोसेस मैंने C# में बनाया है तो थ्रेड भी C# में बनेगा. समझ रहे हो? अगर जावा का एप्लीकेशन है तो जावा के एप्लीकेशन के अंदर हम लोग थ्रेड का कोड लिखेंगे. ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अब आप एक और पॉइंट देखो, ये जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, सी व्हेन आई एम राइटिंग सी डॉट और समथिंग लाइक दिस, ये जो इंटेलिजेंस आ रहा है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय विजुअल स्टूडियो. कैन आई से लाइक दिस? इट इज एंटायरली इन द कंट्रोल ऑफ विजुअल स्टूडियो. ऑपरेटिंग सिस्टम का इससे कोई लेना देना नहीं है. वैलिड है पॉइंट? व्हेन आई गो टू दिस क्लोज बटन, then OS का लेना देना है. OS has to kill this application. But when I'm writing something inside this, and I'm suppose selecting this one, this is completely in the control of Visual Studio. So when we create the thread, thread is within the process. It is controlled by the application. So in other words, I can say OS is not aware of thread being present inside the process. बात समझ में आ रही है? मैंने मेरे एप्लीकेशन में मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट किया है, बट OS इज नॉट अवेयर ऑफ इट. सो हु विल मैनेज द थ्रेड? कौन इस थ्रेड मैनेजमेंट करेगा? वी हैव अवर फ्रेंड दैट इज CLR. रिमेंबर आई टोल्ड यू that .NET application will run in a controlled environment that is CLR. So thread management से related जो भी task है, who will be performing that? So this is our process, this is the CLR, and this is the operating system. So this is OS, this is CLR, and this is our application. So in our application we have the thread. So whatever you require, that you have to ask from the CLR. Is it okay, everybody? So who will maintain this TCP? The TCP management part is also done by .NET application. So CLR is responsible for maintaining the TCP. मतलब CLR को पता चलेगा कि हाँ इसके अंदर 2-3 threads हैं. OS will not be aware of the presence of thread in our application. I hope all of you are able to understand this, everybody. So entire thread creation, thread management, everything will be done by us only. हमें ही करना है वो, और जो उससे related memory management वगैरह है वो सब कौन करेगा? CLR करेगा. So OS will not be taking care of that. So when we look at one important question that is sometimes asked with the thread related part, that if you look at this memory block, we have this stack and this is the heap. So stack can be further divided. Suppose I have 2 threads, so 2 stacks may be there. यहाँ पर T1 का अलग stack frame बनेगा, T2 का अलग. So this part is for T1, this part is for T2, but the heap area is common for them.
सो एक ही चीज है जो थ्रेड के पास अपनी खुद की होती है, दैट इज द स्टैक फ्रेम। मतलब T1 थ्रेड के पास जो खुद के वेरिएबल्स वगैरह रहेंगे उसके लिए अलग मेमोरी ब्लॉक बनता है, T2 के लिए अलग ब्लॉक बनता है। बाकी जो हीप एरिया है, जो रिसोर्सेज है, वेरिएबल्स है, फाइल्स है, वो सब T1 T2 के लिए कॉमन रहता है। इज इट क्लियर? Okay, so let's stop here with this discussion. We will start the implementation tomorrow. कल हम देखेंगे थ्रेड कैसे बनाना है और कैसे उसके साथ कम्युनिकेट करना है। ठीक है, ओके, चलो देन। So bye everyone, have a nice day, take care.